Good evening, dear students, and welcome to this session for your sixth semester of HR Specialization H4, BCH 605H4, and the subject name is Training and Development. This is a subject about which you know from earlier only. Now, this training and development we shall be studying in detail, right? And the total credit is 4, so it is a 4 credit subject. Now the purpose of this course, as you see, is to provide an in-depth understanding of the role of training and development in human resources. Ultimately, what is to be emphasized through this objective is that training and development is very, very essential for every walk of life, be it from any stream of occupation or trade. Everybody needs training in order to develop himself. So training and development, they are inherently linked together, right? So these are the things. Let us discuss a little about your this syllabus. So the very first unit, it talks about training and development, the conceptual framework. So it basically talks about the importance of training, why it is important to impart it to employees. Particularly here we are talking of training and development in terms of people, those who are working in organizations, right? So its importance, then objective of training, why the training should be imparted. So it has been emphasized upon. Then learning environment. So learning environment is also very, very important, because unless there is learning environment, of course there won't be any training and development. So we have to create that learning environment where people are interested to learn, then only they can be trained and develop. So ये environment बहुत essential है. Then learning principles. There are basic principles of learning which should be adhered to in order to train somebody. Then its relevance to improving training design, right? Now here we are talking of learning principles that will help him improving training design, that is designing a training program. So learning principles are to be applied while we are designing a training program. Then cross-cultural training in global perspective. As you know, today it is not only the domestic companies and organizations which are working, it's a whole ethnic and multicultural environment that we have in multinational companies. So cross-cultural training is very important, and that too in global perspective, because most of the companies, they have gone global. So there is a lot of attraction with Japanese, with Korean, with Chinese, with American, with European companies. So naturally that kind of cross-cultural training is very important in today's context, in the global perspective, right? Then training need analysis, that talks about unless we identify the need, we cannot have a training program. So having a adequate training need analysis, that what is the actual need of the employees or people at a particular hierarchy in the organization, that needs to be ascertained. So therefore definition and purpose of training need assessment is there. Then level and component of need, because different level of people are there. The lower level, the middle level, the upper level of management, then the supervisors, the labor class, the people, those who are working at the shop floor level. So that is to say that there is a need for training for every class of persons in our organization, be it the topmost vice president or president of the company to the very lowest level, that is people working by hand at the shop floor level, those who are operating the machines and all, and technical work and job been done. So be it management at any level, be it supervisors, be it workers, everybody needs training. That is to be emphasized upon, right? Then, so the purpose of training need assessment, why we need training, when this answers this thing. Then level and component. So level I have already told you. Its advantages, task performance competency analysis, that how to perform a particular task with the best of your ability. Now in order to enhance that, you need training. आदमी किसी काम को अच्छे से अच्छे तभी कर सकता जब वो वेल ट्रेंड होगा उस काम को करने में. तो ये इसी चीज का एनालिसिस है.
देन ट्रेनिंग डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ मेथड्स, सो डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अलग अलग, अब भाई सुपरवाइजर्स के लिए अगर ट्रेनिंग है तो नेचुरली वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग से डिफरेंट होगा. सो वी हैव टू डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड लेवल ऑफ द पीपल और द पर्सनल और द एम्प्लॉयज. ठीक है, जो ट्रेनिंग एक मैनेजमेंट पर्सन को दी जाएगी वो हो सकता है एक सुपरवाइजर लेवल के पर्सन को या वर्कर लेवल के पर्सन को ना दी जाए, ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. सो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मेथड, बोथ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है जैसा कि आप जानते हैं. सो हियर वी शैल डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और कुछ लेटेस्ट चीजें भी लेंगे. देन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर. एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट डेवलपिंग द मैनेजमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव पीपल. ठीक है, यहां पे हम लोअर लेवल के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम डेवलप कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स को फॉर फ्यूचर रोल प्लेइंग. देन ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, whatever training has been given, it should be transferred. Actually, it should be put to use in your everyday working. So वो हो रहा है कि नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. खाली ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से नहीं होगा, आदमी के काम करने के तरीके में फर्क आना चाहिए, तभी ट्रेनिंग को सक्सेसफुल माना जाएगा. सो दैट ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग in your particular job should be there. Then designing training programs. So designing training program for employees, different employees. Then implementation of training program, how to implement them successfully. उसके stages होते हैं. Then evaluation of training program, whether the training program has been effective or not. ठीक है. Then evaluation based on levels. Obviously different level की requirement अलग है, तो उस basis पे evaluation किया जाएगा कि training effective हुई है या नहीं. Then training feedback. Of course ट्रेनिंग देने के बाद उसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि वाकई ट्रेनिंग देने के बाद लोगों में उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस में फर्क आया है या नहीं, वेदर दे हैव नाउ बेटर वर्कर्स और नॉट. सो ये ट्रेनिंग फीडबैक, तभी हम पता लगा पाएंगे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा था या इफेक्टिव नहीं था, और अकॉर्डिंगली हम फर्दर करेक्टिव मेजर्स लेके ट्रेनिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं. देन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, लास्ट में इसी बात को आगे डिटेल में किया गया है कि ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना, उसकी इफेक्टिवनेस को जांचना कि जो ट्रेनिंग दी गई, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, उसमें लोगों में कितना परिवर्तन आया है उस ट्रेनिंग को लेने के बाद, ये जांचना बहुत जरूरी है, तभी हम ट्रेनिंग को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल मानेंगे. देन इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए, किन किन बिंदुओं पे हम लोगों को इवैल्यूएट करेंगे कि भाई ट्रेनिंग सही हुई है या नहीं हुई है. देन इवैल्यूएटिंग डिजाइन, इवैल्यूएशन का भी डिजाइन होता है कि किस तरह से इवैल्यूएट किया जाए. देन प्रॉब्लम्स एंड पिटफॉल्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को ट्रेन करने में, और जो पिटफॉल्स यानी कि जो कमियां या ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हमें हटाना है जिससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम इफेक्टिव बना सके. सो वो प्रॉब्लम्स और पिटफॉल्स को मैनेज करना आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है. एंड लास्टली ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस, जनरली क्या ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में चलाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी. सो इन अ नटशेल, ऑल इन ऑल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्ट दैट विल बी टॉकिंग अबाउट what is the importance of training, how it should be initiated, what are the things required, right, how it is to be planned at various levels, right, what are the methods of training, then how to design it and implement it, and then evaluate the training. So basically the whole aspect of training and development, which we have done already in your human resource management, that we shall be doing in detail over here. और साथ ही में जहां जहां जरूरत होगी हम इसमें केस स्टडी भी लेंगे. So this was your first lecture wherein I tried to explain you the whole subject in nutshell. Hope you have understood. Okay, thank you.